Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to SAMAA podcast. Today we have a very special guest on our set who is a very successful businessman and also, of course, son of a very, very, very great ex-politician. His father was ex-governor of Pakistan, Punjab. And now today we have his son today, Mr. Shahbaz Taseer. Yes, I'm talking about Mr. Shahbaz Taseer. Thank you. Assalamualaikum. Thank you for having me. Thank you. And it's a wonderful, episode today to have you here. Thank you. And ask you a lot of things which people are always, in a curiosity to know about you, especially. I'm excited. Anyways, so yes, Shahbaz, everyone knows, sabko pata hai, कि you have been through a tough phases of your life, tough stages of your life. So I'll be asking you everything in the middle of it. But before that I would like to, ask you and would like you to share about your early life. You were born in Dubai. Ji. So you had your early education in Dubai or maybe in UK as well? No, so अजीब सा है. I was born in exile. तो मेरी exactly. So मेरे वालिद साहब जो थे वो ज़ियाउल हक के खिलाफ उस वक्त movement, democratic movement का हिस्सा थे. And हम in and out of Pakistan थे. तो it was very बड़ा मुश्किल वक्त था. For the family, especially for my father, क्योंकि हमारे पास तो privilege थी to go into exile, but वो जेल में होते थे. तो पहले I think 10-12 साल मेरी जिंदगी के this was the normal. अब्बा जेल में हैं, अब्बा बाहर आ गए हैं, अब्बा फिर अंदर चले गए हैं, अब्बा बाहर आ गए. मगर जहाँ ये शायद चीज़ upsetting हो normal लोगों के लिए, हम बड़े proud थे. क्योंकि I don't know why, लेकिन मुझे छोटी उम्र से पता था कि मेरे अब्बू क्या कर रहे हैं और कि ये हमारे लिए नहीं है, ये मतलब आम आदमी के लिए ट्रेनिंग चल रही थी, ग्रूमिंग चल रही थी, आप लोग को एक्सेप्टेंस थी कि जी, and फॉर द कंट्री, राइट जी. एंड एक पॉसिबिलिटी कि शायद he might be gone as well in this line of service. अनसर्टेनिटी होती है, छोटे बच्चों के लिए वो बहुत मुश्किल होता है. बट हम बड़े, we were very proud to be his kids, we were very proud of him always. So मेरी सारी education, everything is in Pakistan. I went to London for university, but I came back to finish university in Pakistan. मैं law के लिए गया था and I had a change of heart. और फिर मैं Beacon House National University में I did liberal arts and journalism and films aesthetics. So ये and ये बड़ी insane बात है, लोगों को पता नहीं है, but this course was only available in a few places in the world, and Pakistan happened to be one of them. Yes, and especially in BNU. Yeah, especially BNU. So it was, my life has been spent here. The longest I've been away from home is when I was kidnapped. Yes, I know. That was a tough time for you and for the family, of course, when you had lost your father. Ji. So it was a great trauma. It was. Not for the family itself, for the people around who were the, very great followers of the family and, था, I think, but मैंने हमेशा इसको ऐसे ही देखा है कि अब्बा didn't do this for me. He didn't do it for my family. He didn't do it for wealth. He didn't do it for businesses. He did it for, सबसे जो गरीब लोग होते हैं पाकिस्तान में जिनके बिल्कुल हक नहीं होते, जो minorities होते हैं. So, as traumatic and as tragic as it is for the family, again, we have to be very proud of his sacrifice. Yes, you're great. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका siblings के साथ relationship कैसा है? बहुत अजीब. मेरा छोटा भाई और मैं siblings नहीं हैं. We're more, we're like friends. छोटी बहन is the only one I have a sibling relationship. I'm very protective about her. मुझे हमेशा वो एक baby की तरह लगती है. मुझे आज तक याद है जब वो पैदा हुई थी. So मेरे लिए वो बड़ी हो ही नहीं सकती, even though now she's a mother of 2 and married, and it's very strange to treat someone like a child. मुझे ये बताइए कि you didn't go into the politics. आपने अपने father की legacy को continue नहीं किया इस हिसाब से? अब्बा की 2 legacies हैं. पहले तो हम जो भी उनको जानते हैं उनको सियासतदान समझते नहीं है. हम उनको एक civil rights leader समझते हैं who got very lucky and well, not lucky, he's worked very hard to be appointed as the governor, because governor is not an election that you fight. You don't have to be a elected official in the assembly. Yes, anyone can be the governor. So are you thinking yourself to be
as a governor soon? No. No. Let me just ask you this. नहीं. मेरा देखें. I'm giving you 3 seconds. Just think and rethink again. क्या नहीं, आप अपने आप को गवर्नर is समझते हैं अगले आने वाले कुछ सालों में? मैं आपको सही बात बताता हूँ. मैंने अपने अब्बू को most my life I've seen him. The most incredible difference that he ever made was in work. उनका जब business अपनी peak पे था, he had thousands of employees. और ये कोई textile वाले नहीं थे या कोई ऐसे वो cement वाले नहीं थे या you know, his businesses were like, you know, you work in a media company. Yes, of course, I know that. Real estate, financial service, very different world call, you know, innovative businesses. तब तो बहुत boom पे था मतलब. And look at how much he changed the country. Yes. So this is what I would like to do. Yes, I would like to touch people, to reach them, not through politics, but through other good work. Your intellectual powers and your strategies, business strategies. Intellectual power. Yes, ज़रूर, why not? मुझे बताइए, you're a businessman, of course. You are continuing his legacy somehow by becoming and being a successful businessman. अब मुझे ये बताएं कि business strategies, if you want to give to the youth or the youngsters right now who is just striving into their business. Younger generation ka anyone who needs. I think the first thing is consistency. Yes. जो top tier होता है ना, they've gotten there because of years and years and years and years of hard work. And so sometimes when newer people come in, they look at the older people like, if I'm relaxed, if I'm dressed like this, you know, right, but I've got 25 years of work वो चीज जो एक struggle है वो. So I think consistency, एक चीज जो employers love. I, by the way, hate this employer-employee relationship. I always like to look as peers and co-workers, and I try to treat everybody who works with me like that. You know, मेरा दरवाजा ऑफिस का खुला होता है. Anybody can walk in. I have a very personal relationship with everyone. It's not based on what you can do for me so much, because that's kind of what your job is every day, right? But if you need me, I don't want you to think I couldn't be there. Yeah, but there should be no hesitation. There should be no hesitation. So firstly, the door is always open. But what I love is someone, you know, who takes a lot of responsibility for their work. Pehla banda andar, aakhri banda bahar. Koi kaam de do, you know it's good. Honest. Nice. Diligent, hardworking. Very basic, actually. चीजें जो आजकल थोड़ी सी आपको मुश्किल नजर हर जगह नहीं मिलती. हर जगह नहीं मिलती. One has to be quite smart. So I think unless you want to do everything by yourself, if you want to work in an organization, consistency is, I would tell you, the key. And young people, you know, ये इन चीजों की वजह से we're so distracted. You get diverted. Yeah, you get diverted, you get distracted. But bosses like consistent people who don't get distracted. So in this digital world and this new age and new world, ये जो एक कुछ old school values है ना, they'll take you really far. And generally in life as well. तो वो आपको बहुत फायदा देती है. और ये नहीं कि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं अपने लिए, consistency is the most amazing thing that आप अपने लिए कर सकते हैं. कि हर दिन जो आपका एक fixed routine है, you're consistent about it and you keep adding and learning. So, you know, these are superpower. I always tell people consistency is sabr और routine जो होता है ना, routine का काम और sabr करने वाला, patience वाला आदमी. ये super powers हैं, ये आम आदमी, you know, it's not something everyone can do. ये बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, which is a very sensitive question. Obviously, you have been through it. लेकिन I would like to know about your abduction. How did it take place? Where were you? मतलब I was there. मुझे लगता है कि शायद मैं इन्वेस्टिगेटिव वाली ला रही हूँ चीज, लेकिन आई वांट टू नो, क्योंकि आई वांट टू हैव इंस्पिरेशन अगेन फ्रॉम यू एंड द पीपल जो इतनी बातों को लेकर ना डिप्रेस हो जाते हैं. शहबाज, नहीं, यू नो, एक बात मैं एग्जांपल सेट की है. नहीं, मैं एक आपको बात कहूंगा कि मेरे ऊपर जो अल्लाह का सबसे बड़ा रहम है ना, वो है कि जो भी मेरे साथ हुआ है ये मेरी जिंदगी में लिंगर नहीं हुआ. और मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी और आदमी की स्ट्रगल या दर्द देख के अपनी स्ट्रगल और दर्द को मिनिमाइज ना करें कि यार मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है जब इस बंदे के साथ तो ये हुआ है. दर्द का स्केल नहीं होता. तो जैसे मैं मजाक में मेरा एक दोस्त था, यू नो, ही वाज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक.
तो मैं उसको थोड़ा एडवाइस करने की, यू नो, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि यू नो जब मेरे से, तो ही वाज लाइक ओ बस कर दे, अपनी कितनी बारी बताएगा तू अगवा हुआ है, बट यू नो नाउ ही डजंट वांट टू रिलेट टू विद सच एक्सट्रीमिटी, राइट? सो देयर इज नो स्केल. आपका दर्द उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा दर्द है. The pain is relative, you know. Yes, you cannot actually. But आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, सो मेरे लिए एक नॉर्मल डे था. जो मैं आपको रूटीन की बात कर रहा था. कहाँ जा रहे थे आप? ऑफिस. एंड आपने डीटी का जो MM आलम का, आई थिंक यू वर देयर. आई डोंट नो इफ यू वर देयर. I was there. So you know it's like main road, and आप खुद भी, you know, and you were in your favorite car, by the way. Yeah, I was. Do you still miss that car? Well, I've grown up now, but still the memory is the memory, you know? I think when you're in your 20s and you have a sports car, it's nice. It's a nice thing. When you're touching 40 with 3 children, no, it doesn't suit you. But it was Abbas car, and मुझे बहुत प्यार था, और I took care of it. Apparently, मुझे जो पता है कि you were on phone and it was a daily. Yeah. It was a daily. शाबाना, आप मिली होंगी शाबाना. Yes. You were on phone, but what happened? कि suddenly, in 2-3 seconds, it changed your life, and then you were abducted for 4.5 years, and then you came back, and no one was actually expecting. So मुझे आप उस पूरे का बताएं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या क्या टॉर्चर था, क्या क्या चेंजेस आई, क्या लर्न किया. So पहले तो मतलब वही है, जैसे मैं आपको बता, लाइक आप एक वर्किंग गर्ल वुमन है, एंड आपको पता है, मे बी यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट, जब आप सुबह उठती हैं, आपकी कोई डायरी नहीं होती, आपको पता है मैंने उठना है, मैंने बाथरूम जाना है, मैंने दांत ब्रश करने हैं, मैंने नहाना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने ऑफिस जाना. आप GPS में नहीं कुछ डाल रही ऑफिस का, सारा यू नो इट्स रोलिंग ऑफ ऑन कंडीशन मेमोरी. तो जस्ट लाइक दैट मैं ऑफिस जा रहा था, एंड कल एक्चुअली मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कितनी देर में ये सारा हुआ है, you know, ये वाकया, how long did it take? And I promise you, 10 बंदे थे, और उन्होंने मुझे in under a minute and a half अगवा करके निकल गए थे, एंड मुझे केटामीन का इंजेक्शन भी लगा दिया था. तो मतलब इतनी तेज, अगर आप सोचें a minute and a half कुछ भी नहीं होता. एंड मैं निकला था जो मेरे लिए एक नॉर्मल डे होता है. And you know, you were my also life, going on vacation to I UAE, was right? going on vacation, yeah. And actually I went to office just to take my passport and my money and ये सारी चीजें. वरना I wasn't even supposed to go to office. मगर वही है ना कि जब अल्लाह ने कोई प्लानिंग की होती है. Allah had different plans. लेकिन you see कि Allah had to save you, और जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे. Well, पुलिस वाले मुझे ये कहते हैं. Yes, and then there is another thing कि you were planning for Dubai. Yeah. But you got abducted, and then you went to a very different माहौल, जहाँ पे From Dubai, yes. Yeah, एक जगह से एक different माहौल में चले गए ना. तो did you learn anything? मतलब मुझे positive outcomes भी बताएं, फिर मुझे negative भी बताएं. I learned to live with myself, which I think is something, it's a very alien concept to us. We live, you know, ये जो मैं routine की बात कर रहा हूँ, we live for this routine, and we live a lot for what other people expect of us. Yes. अब्बू क्या चाहते हैं, अम्मी क्या चाहती हैं, खावंद क्या चाहता है, बीवी क्या चाहती है, क्या करना चाहिए, you know. It's very confined. And the only thing जो मुझे इन 4.5-5 साल में मिला था was an unbelievable amount of time with myself. Or I realized how much I dislike myself. I'm not a very lovable, likable person. Only because of the situation. जब आप इतने अंधेरे में घूमे हो, and the only person you have is your own company, you become your worst enemy. So to learn to live with yourself is also a strength. So the people there were Taliban, right? Afghanis or Taliban? No, मैं उज़्बेक के साथ था. उज़्बेक affiliated group के साथ था, जो अफगानी तालिबान की एक सब्सिडरी थी और पाकिस्तानी तालिबान के साथ काम करते थे. अच्छा, so just like Al-Qaeda. All right. So you just tell me कि वो लोग जो थे जिन्होंने abduct किया और जिनके साथ आप उठते बैठते थे, उन्होंने आपको किस तरह ट्रीट किया, क्या उनकी कॉन्वर्सेशंस होती थी, उनकी क्या जिंदगियां थी, उनका एजेंडा क्या होता था, कौन थे वो लोग? मैं आपको बैकवर्ड्स सो एजेंडा, सब पाकिस्तानी काफिर हैं. All right. और ये कत्ल वाजिब है. इनकी औरतें और हाँ, इनकी औरतें बच्चे हम पे हलाल हैं, और प्रॉपर्टी माल भी.
और मर्द सारे कत्लबाज। और ये कौन सा ग्रुप कहता था? ये IMU थे, द उज़्बेक्स, जो पहला ग्रुप था जो आइसिस के साथ गए थे। अब ये इनका एक एजेंडा है, ठीक है, ये उज़्बेक्स का एजेंडा है, और जो बाकी ये ग्रुप्स होते हैं ये भी रोग ग्रुप्स हैं। इनका जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने, उनका एजेंडा है टू गेट रिड ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट और अपना वे ऑफ थिंकिंग को इन्फोर्स करें और हम सबको गवर्न करें। अब हमारे मुल्क में बड़ा ये मसला होता है कि लोग समझते हैं कि मेरी तो दाढ़ी है तो मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़दा तो ए मैनू कुछ नहीं कहेंगे। रॉन्ग, वो आपकी नमाज नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए वो आपको आपकी मस्जिदों में मारते हैं। फदाई हमलों में मुझे बताएं कितनी ज्यादा मस्जिदों में। अच्छा, और ये जो अटैक्स करते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप था? यही था? सारे करते हैं ये अटैक्स, ऑल ऑफ देम कैरी। अडॉप्ट किया था वही मेरे वाले तो सुसाइड बॉम्बिंग के स्पेशलिस्ट थे। तो जो उज़्बेक्स थे उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सेल किए हैं बाकी ग्रुप्स को। सो अगर आपको याद हो 2014 में कराची एयरपोर्ट पे एक बहुत विशस अटैक हुआ था कार्गो टर्मिनल पे, राइट? वो जो अटैक हुआ था वो मेरे किडनैपर ने प्लान किया था और वो उज़्बेक बच्चों ने एक्सिक्यूट किया था TTP की मदद के साथ। TTP भी डिवाइड हो गया था। और जब वो एक्सिक्यूट हो गया तो इफ दे वर नियर यू, सो हाउ वर देयर एक्सप्रेशंस? और दे आर रूथलेस। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मुझे तो आज तक याद है जब वो बच्चे पेशावर में उन्होंने कत्ल किए थे। क्या नाम था बच्चों के? जो आपको कोई नाम याद है जिनके साथ? नहीं, आई डोंट रिमेंबर दोस गाइस। आई नो माय किडनैपर्स नेम वाज मोहम्मद अली, माय वन ऑफ द गार्ड्स वाज सुहेल। लाइक मेरे साथ जो लोग होते थे, they had guards as well. They have guards. वो जो उनके कमांडर होते हैं, okay, they have guards. And I also heard you had a connection with one of their kids or children, or maybe some brother-in-law. Yes. Brother-in-law and children. My kidnappers. So what was the connection? अजीब बात है। The only way आपको मैं वो कनेक्शन समझा सकता हूँ is अगर आप समझें कि मैं कितना अकेला था। All right. और and you know connections is very important because जो हम हैं today, yourself, me, anyone, is because of the connections that we have. The connections, and they have a lot of value in our lives. We become who we are because of these connections. And जब वो सारा कुछ आपसे ले लिया जाए and आपके पास कुछ भी नहीं है सवाए यादाश्त जो एक ओवरवेलमिंग बर्डन बन जाती है। या तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरे किडनैपर का ब्रदर इन लॉ था, उसने मेरी हालात देखी एंड ही ट्राई टू मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ, उसने अपनी वालदा को कहा कि यार इसको साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट इसको डेली नहाने दो, यू नो, या 2-3 दिन बाद तो नहाने दो। ये क्या इस अच्छा, वो लोग खुद नमाज वगैरह पढ़ते थे? वो तो पढ़ते थे, तो उन्होंने आपको पढ़ने नहीं दी? मुझे भी पढ़ने देते थे, बट मुझे लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज़न्ट अलाउड टू शावर। तो फिर कैसे पढ़ने देते थे? मतलब उनको परवाह नहीं थी कि मैं किस हालात में। मैं तो अल्लाह से माफी मांग के कि द बेस्ट आई कैन डू, यू नो, मेरी नमाज नहीं, उनको मेरी नमाज की परवाह नहीं थी। अच्छा, दे वर लाइक हाँ, पढ़े ना पढ़े इट्स ऑल द सेम फॉर अस। ऑलराइट। सो आपके पास बाथरूम था या नहीं? मुझे एक कॉमन जगह यूज करनी होती थी और मेरा एक बेसिकली डस्टबिन था जो मैं यूज करता था और फॉर द लिटर, पूप, व्हाटएवर इट इज, and I had to empty it in that. So I would get maybe 2 minutes in the bathroom. And how were you supposed to clean it off? They asked me to clean it with my hands. मुझे उन्होंने मेरा गोश्त खिलाने की कोशिश की थी। कहाँ से काटा? कमर से वो मेरा गोश्त उन्होंने रिमूव किया और 4 पीसेस थे। And you were unconscious? I was conscious. And एक burner था with it and they threw the ghost on it and then they put a kanta in it and they tried to put it in my mouth and that's when I started going crazy and hysterical. तो फिर वही मेरे जो मैं आपको कनेक्शन नहीं वॉमिट हो गया? मैंने करीब भी नहीं उनको आने दिया। अच्छा। एंड वाइल ये सारा हंगामा और ये चीखें और ये रौला हो रहा था, तो मेरे किडनैपर की जो मदर इन लॉ थी वो उसने आके मेरी जान बचा। अच्छा, तो क्या हुलिया होता था उनका? नकाब में होती थी या? वो तो देखें, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक करामा ही था, क्योंकि वहाँ औरतें पर्दों के पीछे होती हैं तो आप ना उनको कभी देख सकते हैं, ना उनकी आवाज आती है, यू कांट लुक एट देम, सी देम, नथिंग। सो शी ब्रोक दैट टू सेव मी। So you understand? So I get the point. And so ये I always say that ये इतनी impossible situation थी कि ये सिर्फ एक miracle हो सकता था। One thing more, they knew you were ST's son, right? Of course. They had abducted you with a proper plan, pre-planned. So the people around there would know कि अच्छा ये तो ST के बेटे हैं। नहीं, that was very। एजेंडा क्या था उठाने का? क्या so ransom था और
वो बांदी जिनको कहते हैं, prisoner okay, exchange. okay. So they at the time they wanted 4 अरब रुपए. 2011 में that was 60 They million. wanted from you and your family personally. Demand was of the government of Pakistan. Okay. So it was $60 million and 30 of the highest ranking terrorists in the world. And सबसे पहला नाम मेरे वालिद साहब के कातिल का था. So कुछ आप लोग दिया इसको? नहीं, I got lucky. I escaped. So how did you escape? Now let's come to that part. Okay, maybe after 4.5 years, one day you wake up and you see the sun again, like the normal routine. But you never knew that will be your escaping day. Yeah. So how was it possible? So मैं फजर के लिए उठा था और हम अब उज़्बेक और तालिबान की जंग हो गई थी और उन्होंने उज़्बेकियों को कत्ल कर दिया था. ऑलमोस्ट सारों को 99% वाइप आउट कर दिया, अपने लोगों को. एंड आई वॉज वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ सर्वाइवर्स. एंड हमें उन्होंने एक अफगान जेल में भेज दिया इन अ प्रोविंस कॉल यूरोज़गान, मिडिल अफगानिस्तान. तो मैं फजर की नमाज पढ़ी और हम एक जगह थी जिसको हम यार्ड कहते थे. तो मैं और कुछ अलकायदा के बंदे, वो अरबी थे, उनको इंग्लिश आती थी, तो मैं उनके साथ बैठता था. अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे होते थे या ऐसे? हाँ, अलकायदा के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं. उज़्बेक भी पढ़े लिखे होते हैं. You were abducted, so you were from a नहीं, मैं शायद ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ऑलराइट, मगर वो भी पढ़े लिखे. एक सर्टेन क्लास होती है. अरब बहुत पढ़े लिखे होते हैं. अच्छा. जो अरब फाइटर होता है अलकायदा का, वो लाइक एक बंदा बहरीनी था. तो आई थिंक उसका तो ही वाज यूएस एजुकेटेड एज वेल, कॉलेज वाइज. आई कांट टेल यू दैट फॉर फंडिंग होती है या लोग खुद से? नहीं, द स्टेट पेज ना. स्टेट जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में पैदा होती हैं तो अरब यूएई सिटीजन, तो वो आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपको घर देंगे, नौकरी देंगे, पैसे हर महीने देंगे, वो आपका ख्याल रखते हैं. तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये एकदम से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए अपने अंदर, मतलब यू वर अ वेरी यंग केयर फ्री पार्टी बॉय, जैसे होता है ना, एक चिल सा बच्चा हो गया, जवान लड़का हो गया. You were again turned into a proper 5 वक्त का नमाजी and being very close to religion, which is a very good thing. People do change. It's perfectly fine. Yeah. So वो क्या, मुझे बताएं, वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टी बॉय से? So I don't know. I you know, I was always very grounded. But I like to have a nice time and I like to live. And you're still following it. Yeah. Whatever you learned through those. Yeah. No, I'll tell you that even today I have a balance. You know, okay. I like to go out. Yes. I like to eat good food. I like to wear nice clothes. That's good. I love traveling. I love history, and that history is not constrained. Like it's not कि आप सिर्फ ये history पढ़ सकते हैं. Yes, I'll go all over. You know. And you love traveling. I love traveling. लाहौर के खाने पसंद है आपको? नहीं, कराची के. अच्छा, कराची हूँ मैं लाहौरी, मगर एज अ फूडी यू हैव टू बी ऑनेस्ट. सो व्हाई वो कराची के कौन से? बेस्ट फूड इन पाकिस्तान. अच्छा, मुझे ये कुछ भी आप कुछ भी जाए. पाकिस्तान और लाहौर की लोकल बसेस या रक्शास में या वैगन्स में? मैं जितना लोकली ट्रैवल कर चुका हूँ कोई नहीं है पाकिस्तान. कब किया आपने ट्रैवल? मैंने सारी ये मैं अपने बच्चों को ऑन द बस लेके गया हूँ, यू नो, जस्ट टू शो इट टू देम. बट वैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं CD 70 यूरोज़गान से, विच इज बीच अफगानिस्तान से क्वेटा तक मोटरसाइकिल पे आया हूँ. अच्छा, एक सवाल मुझे बताएं, आपने जब अपनी मदर को कॉल की 4-5.5 साल बाद, तो उनका क्या रिएक्शन था? डिड शी रिकॉग्नाइज और डिड शी? फर्स्टली नो, बट ये बड़ी गुस्सा होती है मेरी वालदा जब भी मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि मैंने तो इसको मजाक बना दिया, लेकिन वो कहती है आप कैसे ये कह सकते हैं. मजाक करने से पहले मैं आपको एक बात, आपको नंबर याद था? अच्छा, नंबर 4-5 साल तक हम पुरानी जनरेशन है ना, तो हम लोगों को तो ये नहीं होते थे. यूजुअली होता था कि नहीं, we didn't have this. Get confused. Everyone that you loved and were interested in before 2011. सब मॉम ने क्या रिएक्शन दिया? So जब मैंने उनको फोन किया, मेरी बड़ी अजीब फोन थी, क्योंकि मैं एक एरिया में था जहाँ सिर्फ तालिबान थे, हर जगह तालिबान थे. They didn't know कि you are the I didn't know, they didn't know. हाँ, so मैंने एक बंदे से मोबाइल लेके अपनी अम्मी को फोन किया और मैंने उनको बेसिकली आराम से इस तरह मैंने कहा, अम्मी आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने की मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूंगा. तो जिस जगह में मैं हूँ वहां हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते. अपनी तरफ से मैंने कहा कि मैंने बड़ी अच्छी आपको वो गाइडेंस और ये दी है. तो उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? मैंने कहा कितने आपके बच्चे हैं जो गायब हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा किधर हो तुम? नो, वो तो देखें. फिर अब मैंने तो अपनी अम्मी को कहा कि चुपचाप मुझे यहाँ से उठाएं, बट मेरी अम्मी उस वक्त इंटेलिजेंस और मिलिट्री और इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन में थी. तो उन्होंने, जो उस वक्त कोर कमांडर थे, वो पहले लाहौर में थे और वो पूरी इंटेलिजेंस मेरी किडनैपिंग की मेरी वालदा के साथ करते थे.
Alright. और फिर उनका क्वेटा ट्रांसफर हो गया, और वो मेरी अम्मी आपको खुद अगर कभी आप उनसे बात करें बताएंगी कि मेरे लिए वो सबसे डिप्रेसिंग डे था, क्योंकि जो आदमी मेरी हर दिन मदद करता था वो अब चला गया। yes. मगर उसने मेरी अम्मी को कहा था मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपका बेटा आपको घर ला के दूंगा। सो आप सोचें 3 साल बाद आई एंडेड अप इन क्वेटा, एंड सो मेरी वालदा ने सबसे पहला फोन जनरल साहब को किया और कहा कि वो इधर कोई जगह है, कुछ लाख मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कहा इट्स 25 मिनट्स फ्रॉम क्वेटा, इट विल टेक मी 45 मिनट्स, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज करना है। उन्होंने आई टेल यू वो फिल्मों में कहते हैं ना वो स्वाट टीम आ गई और ये और वो and then you were released finally. The way that the Pakistan Army, MI and intelligence carried that, you, yes. Yeah, that's they wonderful. recovered. They really like मैं बड़ी impossible जगह में था. That seems to be a very filmy thing, लेकिन that is something. It was very filmy by the way. मेरी reaction भी बड़ी filmy थी. And the army all. Yeah. Obviously. So फिर मैं गाड़ी में बैठा and obviously that conversation between my mother and me. Finally, so आप खुद सोचें 5 साल बाद. I can actually मतलब imagine कि कैसा वक्त होगा. अभी भी if mama and me get into an argument or a fight, we make up remembering that day. That great. You know कि याद है हम जब दूर थे. आपने बुक लिखी है Lost to the World, a memoir of faith, family and 5 years in terrorist captivity, जो कि मैं नहीं पढ़ सकी, अवेलेबल नहीं है, Amazon पे है. I'll send it to you. Yes, sure. तो मुझे बता उसमें कोई ऐसी चीज जो कि अब तक आपने वैसे वर्बली नहीं बताई. मेरी escape की कहानी मैं कम बताता हूँ लोगों को. I always tell them read the book. Because the amazing thing in the book is the escape. क्योंकि एक तो है ना जो दर्द और जुल्म और कैप्टिविटी और टॉर्चर, वो तो आपको मैं खुद 100 बार बता दूं, मगर जो एस्केप थी वो मैंने बड़ी वेल प्लान्ड और एक्सिक्यूटेड, और आई मेड अ पर्सन अप and alhamdulillah, you know, you're saying you can't find the book, that means it's sold out. That's a really good thing. It's sold out. It's on Amazon and it's actually one of the best, जैसे कहते हैं ना बेस्ट सेलर वाली. अच्छा मुझे ये बताएं, एब्डक्शन फेज के बाद जब आप वापस आए तो माहीन से जब आप मिले तो वो कैसा फेज था? ना यू वर चेंज. अब आप 4 साल बाद आ रहे हैं, एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक डिफरेंट चेंज होता है, तो माहीन ने किस तरह से आपको एक्सेप्ट किया, या मतलब होता ना कि एक दूसरे को आप लोग किस तरह से लिया? It's I'll be honest with you, देखें जब एक इंसान goes through whatever I went through, and बहुत rumors हैं और बहुत बातें हैं, none of it is true. The truth is when you are away, two people are so far away, yes, you completely grow apart into 2 different people. Yes. And that's the truth. It's happened, I'm not the only one. It's happened with millions. It happens every day. You can dramatize it, you can make it into something it's not. But it's a chapter that I closed. I have a daughter who I work very hard to raise. But I will say this, that where one chapter closes, I've been blessed. Allah has been kind to me that I found a partner who I am very, very happy and comfortable with. And जो भी आदमी उस tragedy से आया था, he has to, that, you know, I'm not जो आप कह रही थी, जो 2011 में मैं आदमी था, जो भी था, जो गया था, that's not the same person I am today. I do like going out, I do like traveling, I do like eating, but am I the same person? No, I have a completely different set of values. And that's it. And now I'm just in a much happier, better place in my life. I love my children. I have 3. They are just, you know. That's great, mashallah. Yeah. That's great. मुझे ये बताएं शहबाज के शहरियार के साथ किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती है घर पे? कभी कपड़ों पे होती है? नहीं, क्योंकि वो मेरे से लंबा भी है और I would say he weighs more than me. वो तो नहीं मानेगा ये बात, मगर मैं स्मॉल साइज हूँ और वो मीडियम है. So we can't have the same clothes, we don't have the same taste, we have nothing. We have nothing, and right now we're fighting. So all right. अच्छा, but हम एक साथ बहुत लड़ते हैं. अगर कोई भी एंटी मैन यूनाइटेड का आदमी हो ना, तो हम दोनों मैन यूनाइटेड हो जाते हैं, तो वो दैट्स ऑल वी नीड. अभी हम 2-3 दिन से हम दोनों का झगड़ा हुआ था, तो कल यूनाइटेड लिवरपूल की गेम थी और 3 हमारे दोस्त थे जो मतलब लिवरपूल फैंस थे, तो मैंने और शरियार ने उनको सही चपेड़े मार के, उनको 95 मिनट्स का मैच था, उनकी जिंदगी हमने दोनों ने मिल के हराम की, और जैसे ही गेम खत्म हुई हमने कहा आई डोंट लाइक यू. गुड मैं समझ सकती हूँ क्या किया होगा उन्होंने भी. ओके, अब मैं आपसे ना आपके साथ एक नाम शेयर करती हूँ, जल्दी से इसको सजेशन दे. बिलावल. जल्दी 2 seconds. Oh, 2 seconds? Okay. Yes. They should form an alliance with PTI. अगर आपको अच्छा आपको लगता You weren't expecting that, were you? अच्छा, अगर वो वजीर आज़म बन जाए फिर? इमरान खान को जेल से निकालना चाहिए. One suggestion for शहरबानो.
Taseer? Yes, your sister. She's the most incredible person I know after my mother and wife, and any suggestion I give is less than what she can do. She's incredible. One suggestion for Neha. Acha, the women in my family, I can't guide them. All right. They're not dominant. They're exceptional people. Okay. My sister is a journalist in training. Of course, I know her. So she's and very she talented left woman. everything to do charity for laborers. Very तो जो nice. आपके मुल्क में जो brick laborer होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं ना, she raises money for them and rations daily. तो Very उनका nice. daily खाना वो कोई 1000 बंदा है वो ये organize करती Very है. nice. इस तरह की औरत को मैं क्या बोलूँगा. हाँ. अच्छा, मेरी वालदा भी बिल्कुल ऐसे हैं और मेरी वाइफ भी ऐसे. मैं अब इन तीन को मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ. शरियार के लिए लाख सजेशन है. शरियार के लिए प्लीज दें, प्लीज. वो सुन रहा होगा आपको. Wake up early, go to bed early, be a nicer person, stop wearing my clothes, stealing my shoes, stealing my style, stealing my thought, stealing my vibe, stealing my energy. हाँ तैनियत. अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि मैं असल में उसकी इतनी तारीफें करता हूँ और मुझे कल पिछले 3-4 दिन में लगा है कि ये बड़ा नाशुक्रा आदमी है, जिस उसको मौका मिलता है मुझे चाकू मारता है. हाँ, तो आज हमने भी बिल्कुल ठीक किया आपने. अच्छा, मुझे ये बताया, अगर आपने एडवाइस करना हो बिलावल को, तो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से क्या एडवाइस देंगे? कि आपको जो सही लगता है आप करें. वाह. नहीं, एक्चुअली ही इज अ उसकी नवाज ट्रेनिंग. शरीफ को भी दें जरा एडवाइस दे दें, मान जाऊंगी मैं आपको. जिन लोगों के साथ आप लोग बैठ रहे हैं मत बैठे. इनको असेंबली में सियासत करनी चाहिए. मरियम नवाज शरीफ. What could I advise her? Well, Yes. My advice would be more pro-electoral governance. All right. Give the assembly the respect it deserves. मैं इन सबको बाय द वे एक बात कहूँगा, इमरान खान को, मियाँ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल को, मरियम को, जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो गोदी जंपिंग जो होती है ना, इट ऑलवेज कैचेस अप. बट जो आदमी जिसकी कन्विक्शन होती है ना टू डू द राइट थिंग, no time can catch him, no person can catch him. He's free. You're right. And he's free from shackles. I know Bilawal never signs a blank paper. He tries to be free. Right. But I just say that certain people should be in barracks and certain people should be in assembly, and both of them should not confuse their roles. This is what I would like as a Pakistani. What I don't want is to have this opinion and go to jail for it. So, all right. मुझे ये बता, शैबी और शहबाज 5 years in terrorist captivity. Yes, I can understand. The difference between Shabby and Shahbaz. वही जो आपने खुद कहा था, a carefree. Now into a very organized person. I wouldn't say organized. मैं आज भी I take every day as it comes. I don't like to confine myself, but I have. I feel like मैंने अल्लाह को जवाब देना है for the second life. Good. Maybe पहली life जो थी उसका मैंने किसी को जवाब नहीं देना. You're right. But इस जिंदगी के लिए I have to answer because he gave me this chance. Okay. Now one word for Bushra Khan. अच्छा, so advice for Bushra Khan. You're an amazing professional. I've known you for a few years. And you have that consistency in your routine, and really just, I always tell people, if you're not happy with what you're doing, just go for aim for the stars. If you land on the moon, even on earth, at least you'll achieve what you want. Thank you. And also, of course, for the Bushra Bibi. You're not going to trap me. You're not going to trap. You know something? I think that men should not give women advice. Oh, how's that? Very political. But I really believe it because I live in a home where I can't give the women their advice. I get it. So how can I be a hypocrite and tell Very you no? I see you. I can't give Taniyat advice. Taniyat is my chief advisor, so that means my advice is written by a woman as well. So I don't give women. अच्छा, मुझे ये बताए, कोई फेवरेट किसी एक्ट्रेस बॉलीवुड के साथ काम करने का मौका मिले? बॉलीवुड फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिस तरह आप मूवी करना चाहते हैं, मजे की अच्छी सी मूवी? मैं आपको एक सच बताता हूँ, I'm not a Bollywood guy. चले पाकिस्तान में आ जाते हैं. Pakistani, anyone. I love Mahira, I love Fawad, Ehsan, Hamza, Ali Abbasi. आप लड़कों के साथ करेंगे यार लीड रोल? मुझे लड़की तो नहीं प्ले. अच्छा, you want to see me in a movie? मतलब लड़की कौन होगी मूवी में? Well, उस तरह तो we should go for, a Hollywood actress like Scarlett Johansson. I would like to be an Avenger. If we're putting me over here. But yeah, any of the top, I mean, if I ever got that lucky. But नहीं, अगर मेरे पे मूवी बने,
तो I would love a Pakistani to play Pakistanis to play every role. And I hope it's a Pakistani movie with Pakistani directors and world level. Like, you know, everybody wants to achieve that milestone. I really hope, like, Sharmeen Obaid did it. You know, so I really hope that my story can do that. Inshallah, we'll see that. Yeah. But I don't think मुझे कोई फिल्म में डाल रहा है. कर लेंगे कोई बात करते हैं किसी से. मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में रहते हुए आपको पश्तो आ गई, आपने सीख ली, कोई सेंटेंस पश्तो में सुनाए या कहें. बार सरंगे तू सारा सही शुए. Everyone good, everyone okay. But yeah, मेरी अब पश्तो काफी कमजोर हो गई है. बट मुझे उधर उज़्बेक और मैंने पश्तो सीख ली थी. मेरी पश्तो भी दावरी है. तो वो ट्राइबल पश्तो है. इट्स नॉट लाइक जैसे पेशावरी पश्तो बड़ी साफ है और अफगानी पश्तो थोड़ी हाश है, मगर दावरी पश्तो जरा सी टेररिस्ट जुबान है. कोई गाना सुना दे फेवरेट बिफोर वी रैप अप द सेशन राइट नाउ. अच्छा सुर वाला को पता चले शहबाज तासीर. मैं थोड़ा सा रैप जो दिल करता है. इट शुड बी योर वॉइस. बट आई एम नॉट अ सिंगर. I do have a few surprises. मैं मूरू और राके के साथ एक दो चीजें करूँगा. चलो जी, टिक टिक 1 2 3 here you go. Oh my god, I'm really on the spot. I can't sing. I can't sing. You can't. कुछ भी यार, रैप. The bezel is Tiffany stamp. Don't grip on my hand. I know that I came from left to right, but now I don't want to dance. So there you go. By the way, ये जो Tiffany is bezel stamp, मैंने अभी अफगान तालिबान को देखा था with पाते फिलिप Tiffany. So देख वो हमसे आगे हैं. अच्छा, वैसे कभी किसी अफगानिस्तान के जो ग्रुप था जिनके साथ कभी राब्ता हुआ, कभी किसी ने इस्लाम दो? एक बहुत फनी स्टोरी है. क्या? जब इनकी हुकूमत आई तो अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक तस्वीर लगाई. वो दोहा जा रहे थे अपनी पहली इंटरनेशनल मीटिंग के लिए. तो वो 6 उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स थे, दे आर ऑल तालिबान. तो वो प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए थे और उन्होंने ट्विटर पे पिक्चर लगाई. तो मैंने वो देखी और मुझे कोई मसला है ट्विटर पे, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, मगर बाकी सब चीज़ों पे तैनियत कंट्रोल्स माई सेल्फ. बट ट्विटर पे इवन शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर मी, बिकॉज मैं लिख देता हूँ. तो मैंने बेसिकली लिखा, देखो भाइयों, हम CD-70 पे होते थे और अब हम प्राइवेट प्लेन्स में दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं. और उसने मुझे वापस जवाब किया, कहता है थैंक यू ब्रदर. यानी कि उसने आपकी इस चीज को उसने एक्नॉलेज किया. ही इज लाइक थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट ले लिया. आपका सरकाज़म. तो मुझे शरियार का फोन आया, कहता है ब्रो. मैंने कहा हाँ भी. कहता है, are you directly communicating with the Taliban? I was like, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. कहता है, are you directly doing मजाक with the Taliban? That's too risky, man. like, जब इस तरह तुम कहते हो तो obviously it sounds That's scary. just too risky. लेकिन ठीक है, they're legitimate, responsible government. So कभी सिक्योरिटी का इशू है दोबारा आने के बाद? अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह ना करे. चलिए गुड इंशाल्लाह. Otherwise you get a second book. Everyone's been saying आप second book लिखेंगे, हमने खुदा का नाम लिया. We're not waiting for your second book. Let things stay in peace and you know, in a better place. But you know, I've been very lucky. और 2011 में जब मैं अगवा हुआ था तो इस मुल्क में एक अनसर्टनिटी थी, एक एटमॉस्फेयर थी जो मुझे बहुत वायलेंट फील करती थी. और मुझे और मेरे खानदान को इधर रहने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी. आज things have changed completely and I tell you कि जो प्रोफेशनल्स यंग लोग हैं ना, वो उन्होंने फॉर फ्रंट लिया है. जब भी मैं स्कूल्स जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, आई हैव ओनली रिसीव्ड लव. I have never ever received, and when I say love is a very complicated term for me. It's not an easy word. It means an understanding of my family's story. Yes. It means an understanding of my father's sacrifice and the pain that I've gone through. Yeah. You know, and when somebody can understand that and have an opinion that is mature, that's a huge win for Abba. That's great. मुझे पता है, do you think elections होंगे या नहीं? होने चाहिए. कौन आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी फ्रंट पे? मियां साहब. आपने पहले ही तय कर लिया, अभी वोट भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आपने पहले ही तय कर लिया. गुड. दैट्स कॉल्ड बीइंग अ पॉलिटिकल while being non political. It's a very easy political analysis. Very diplomatic. Yeah. By the way, it's but नहीं, मियां साहब will be the prime minister unless the PPP form an alliance with PTI. No, you're just IPP. you're just trying to play Said Bilawal right now just on screen. You're just trying to do that. But मेरी उनको एडवाइस है, अगर आपकी PMLN और PPP की नहीं बनती तो PPP, PTI और IPP के साथ कर ले, they'll become the federal party. That's great. अच्छा मुझे बताइए, चाय कैसे बनती है?
मैं काली चाय पीता हूँ चीनी के काली चाय कैसे बगैर, और बनती है? मैं पत्ती वाली भी नहीं पीता हूँ, मैं दम वाली पीता हूँ। दम वाली चाय कैसे बनती है? जल्दी से बताइए। हम लीव्स बॉईल करते हैं और ऑब्वियसली हॉट बॉइलिंग वाटर में, और उसमें मैं थोड़ा सा दूध डालता हूँ एंड आई ड्रिंक इट। इतनी भी नहीं, सो द पत्ताज आर इन दम, राइट? सो यू गेट द चाय आउट ऑफ द पत्ताज, नॉट फ्रॉम द टी बैग। और मेरी एक आंटी थी जिसने मुझे ये सिखाया था, एंड गॉड ब्लेस हर, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन। और एक बार मैं उनके सामने अपनी पत्ती वाली चाय बना रहा था और उसने मुझे देख के कहा ये तावीज वाली चाय ना पिया करो। She was right. I was like, what does that mean? She's like, असल चाय ये होती है। असल चाय होती है दम वाली। So पत्ते, you take the juice of the chai out, and it's fresh, and then you make it. Yeah, you do. Not just like that Bushra, and not that. Oh my God. But the different wala dam. I get it. By the way, thank you Shahbaz Taseer, Mr. Shahbaz. Thank you so much for being here. And I'm sorry for confusing you. No. And making our SAMAA podcast very. I'm sorry you asked me for advice and I thought you were somebody else. पता नहीं लोग बुशरा खान को बुशरा बीबी से क्यों relate करेंगे? वो different है। I'm sorry. वो जो है ना, she's another personality and I'm another personality. I'm just a simple SAMAA podcast woman. I don't have any dam drood unless it's a dam wali chai. You didn't hear it from me. Acha ji, we have to reluctantly wrap up the session of this today's special episode which we had just with Mr. Shahbaz Taseer. It was lovely having him here today and we learned a lot. We got to know a lot about him, about his past experiences, future goals, projects, life and everything, as always people would love to know. So yes, we are again catching up until we get back to the next episode. Till then, just stay tuned, but do not forget to share, like and subscribe our SAMAA podcast as usual. Bushra Khan's just leaving, but do not go anywhere. Bye-bye.